Assalamualaikum. How are you all? Hopefully, you are all good. Our today topic is modernism and postmodernism. In this video, we are going to study what is modernism and what is postmodernism in detail. We will see their main differences and their life circles clearly. You're welcome in your beloved channel, Study with Khaula. Let's start today's video without time wasting. Introduction. First, we have to introduce what is modernism and postmodernism are two movements in literature and art. The distinction between the two is hazy. There is no well-defined boundary between them in chronological, aesthetic or political terms. मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म जो हैं ये दो मूवमेंट्स हैं लिटरेचर में और आर्ट में, बट इनके जो मेन डिफरेंसेस हैं वो बहुत ही हेजी है, नॉट क्लियर एट ऑल दैट वी कैन एलैबोरेट द थिंग्स इन डिटेल. इनकी कोई भी वेल बाउंड्रीज डिफाइन नहीं की गई, इवन के क्रोनोलॉजिकल, लाइक इन अ हिस्टोरिकल वे, लाइक इन अ स्टैटिक वे, लाइक इन अ ब्यूटी वे एंड लाइक इन अ पॉलिटिकल वे. There are no specific boundaries explained in any book. Modernism. As a literary movement, modernism flourished in Europe and America in the 1920s and in 1930s. Modernist writers experimented with forms, devices, and styles. They made use of the psychoanalytic theories of Freud and Jung. Their works reflected as a sense of loss, disillusionment, and even despair. Writers like T.S. Eliot and James Joyce saw a fragmented world, but hoped the fragmentation could be countered through their works. अगर हम बात करें कि मॉडर्निज्म जो लिटरेरी मूवमेंट है, इसका आगाज या इसका बहुत ही अरूज या फ्लरिश की यूरोप में और अमेरिका में. मेन इनके जो इरा थे 1920 से लेके 1930 तक थे. मॉडर्निस्ट राइटर ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो वो जो मेन एक्सपेरिमेंट था वो तीन चीज़ों पे था. नंबर 1 इज फॉर्म, नंबर 2 इज डिवाइसेस, नंबर 3 इज स्टाइल. इन्होंने दो इम्पोर्टेंट जो राइटर्स हैं, मेन साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है फ्राइड और योंग, इनकी साइको एनालिटिक थेरीज को अपने काम को बढ़ाने में या एक्सप्लेन करने में इस्तेमाल किया. इनके काम में अगर हम गौर करें कि मॉडर्निज्म जो राइटर हैं, मॉडर्निस्ट जो राइटर हैं, उनका काम किस तरह का था, उसमें मेन चीज़ सेंस ऑफ लॉस है, डिसइल्यूजनमेंट है कि कोई भी चीज़ क्लियर नहीं है, उसमें सेंस ऑफ लॉस है, सेंस ऑफ होप है, और इवन के इतना ज़्यादा डिस्पेयर है कि बिल्कुल ही लाइफ से कट ऑन किया गया है. जैसे कि अब इसमें जो शऊर रखने वाले राइटर्स थे जैसे कि टी.एस. इलियट थे और जेम्स जॉयस थे, इन्होंने जब ये सारी चीज़ें देखी, इन्होंने बेसिकली देखा था फ्रेगमेंटेड वर्ड, अ काइंड ऑफ सेपरेटेड वर्ड जो कि बिखर चुका है. लेकिन दे होप द फ्रेगमेंटेशन दे कैन फ्रेगमेंटेड दे कैन collected the word, they can collected the word with the help of their work. So they try to remove this fragmentation and try to unite all the things. So they work on this with very hard work. Modernism experimented with a number of literary endeavors and styles. They struggles a lot in this field. Modernist works are often called avant-garde. For example, advance-garde. Avant-garde किसको कहा जाता है? What is avant-garde? Any creative group active in the innovation and application of new concepts and techniques in a given field. वो लोग जो नए तजर्बाती तसव्वुरात या नई तकनीक या नए नक्शे का शोबा या फ़नून लतीफ़ा में कोई नई चीज़ ईजाद करते हैं, वो कहलाते हैं avant-garde, जो कि कोई नई चीज़ को इन्वेंट करते हैं. The modernist writer regarded themselves as alienated from the established order. वो अपने आप को उसमें एक
बहुत ही तन्हा सा महसूस करते हैं कि दे आर नॉट द पार्ट ऑफ दिस, दे हैव टू change the world, they have to fill the life in the world. Their purpose in writing to shock the sensibilities of the conventional readers so as to lead him in the march ahead. They try to lead the way, they try to give them a way for work on sensibilities, on they want that the modern people use their mind, their senses in a healthy way. Viewers, let's look on modernity circle. Modernity circle is very amazing. It relevant with social class, science added progress, and finding the truth. They added the knowledge in a very healthy way. They try to find the realities and all the things which are not clear. They try to unite it with community life, family life, a belief in continuity and situation. These are the important things that modernity circle have. What is postmodernism? Postmodernism refers to certain radically experimental works in literature and art. It is distinguished from modernism is that it is a term applied to the literature and art after the Second World War, especially in the works of the experience of Nazi totalitarianism and mass experimentation of Jews. Postmodernism works include such genres as the absurd, the anti-novel, concrete poetry, for example. All of works challenge the ideological assumption of contemporary society. तो जी मॉडर्निज्म की जो सोच थी वो टोटली रेडिकल थी और जो कि काम किया उन्होंने आर्ट पे या लिटरेचर पे और पोस्ट मॉडर्निज्म जो मूवमेंट है टोटली डिफरेंट है फ्रॉम मॉडर्निज्म क्योंकि इसमें ये तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है ये स्टार्ट हुई थी और इस काम में मैस एक्सपेरिमेंट जो बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए गए लोगों पर वो थे ज्यूज़ इसके अलावा इसमें जो जॉनराज हैं वो भी मॉडर्निज्म से डिफरेंट हैं लाइक इसमें अब्सर्डिटी है नॉट क्लियर थिंग्स धुंधले हैं बेहुदा से हैं द एंटी नोवल नॉट आर न्यू थिंग्स इन दिस concrete poetry solid poetry not require any change in them they all challenge the ideological assumption of their society at that time contemporary means हम असर लोगों की उस वक़्त के दौर के लोगों की हर चीज़ को उन्होंने आइडियोलॉजिकल assumptions को उनके beliefs को इन्होंने चैलेंज किया देखते हैं गाइस पोस्ट मॉडर्निज्म सर्कल में क्या क्या आता है फर्स्ट ऑफ ऑल सर्च फॉर ट्रुथ मॉडर्न एज हैज लॉस्ट द एनलाइटमेंट सो दे वर्क ऑन दिस ग्लोबलाइजेशन हैज नैरो टाइम एंड स्पेस दिस इज ट्रू कि जैसे ही ग्लोबलाइजेशन ज़्यादा हो गई है टाइम और स्पेस बहुत ही तंग होता जा रहा है लोगों के पास वक्त नहीं है लेस प्रिडिक्टेबल ट्रेडिशनल लेबल्स एंड कैटेगरीज लूज रेलिवेंस cultures and structures are fragmented that this is true also they are separated fragmentation of social life is also seen in their behaviors and in their writings so guys viewers, let's discuss the main differences between modernism and postmodernism. Modernism began in the 1890 until 1945. On the other hand, postmodernism began after World War II. Modernism was based on using rational, logical means to gain knowledge. They used their mind and they used their senses. And postmodernism denied the application of logical thinking. They not believe on thinking theoretically. They not use their logics. They denied to accept these logical thinkings. Modernism approach was objective, theoretical, and analytical. But, on the other hand, postmodernism was based on an anarchical, on totalized and indeterminate state of knowledge. Anarchical means they not use any laws, without laws, lawless thinking, they terminate
वो टर्मिनेट कर देते हैं, यानी कि ख़त्म कर देते हैं देयर प्रॉपर स्टेट ऑफ नॉलेज. इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड एंड डिटरमिन nature of knowledge, but on the other hand, postmodernism approach was based on subjectivity. There are some other differences, like modernist thinking is about the search of an abstract truth of life. On the other hand, postmodernist thinkers believe that there is no universal truth, abstract or any on other realities. They not believe on this. During the modernist era, art and literature were considered as a unique creation of the artist. But on the postmodernism era, the oneness of computers, media, and advancement in technology, television, and computers became dominant in society. मॉडर्निज्म की जो मेन चीज़ है, ये हमेशा ही क्रिएशन पे और ऐसी चीज़ों पे बिलीव करते रहे हैं जो खुद से क्रिएट की जाएं और यूनिक हो. बट पोस्ट मॉडर्निज्म ने इन सब चीज़ों को डिनाई करके टेक्नोलॉजी, टेलीविज़न और कंप्यूटर, जो भी आजकल मॉडर्न जो चीज़ें हैं, मीडिया है बेसिकली, उन्होंने उसको अहमियत दी. तो ये तो गाइस थे मेन डिफरेंसेस बिटवीन मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म. इसी के साथ आज की वीडियो को करते हैं ख़त्म. थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर टाइम. काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल स्टडी विद खोला एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद अदर्स हु लव्स नॉलेज. मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ. अल्लाह हाफिज़.